Ladies and gentlemen, all four of us come to you today with eggs on our faces in deep poo poo, our predictions having gone completely wrong, and basically all of footballing world still in shock after almost 24 hours after what transpired in the Club World Cup 2025 final, where all of us, I'm sure you, unless you were of a Chelsea bent, I'm sure you were also predicting कि भाई PSG आज तो ले जाएंगे मैच आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. All four of us were super confident. Rex didn't want to be confident, but he was also confident. बट या चेल्सी ने जो पीएसजी ने किया है पूरा सीजन, इनफैक्ट पिछले 6 महीने में पीएसजी ने जो किया है विद all the top teams in Europe, all the top teams in this Club World Cup with Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Inter Milan, वो आज उनके साथ हो गया है कल रात को बेसिकली. बट Chelsea have managed to beat PSG 3-0 in the Club World Cup final. Chelsea have managed to lift the inaugural edition of this particular side of Club World Cup, this particular kind of Club World Cup. And Chelsea have managed to give the world a meme with Donald Trump. So that is something to celebrate, maybe. So yeah, welcome back to Top Corner. हम लोग आज बात कर रहे हैं चेल्सी की फेमस विक्ट्री. आई एम श्योर दिस विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ व्हाइल. डिस्पाइट देम हैविंग 45, 47, हाउएवर मेनी प्लेयर्स दे हैव, दे मैनेज टू मेक इट वर्क. हम लोगों ने पिछले 2-3 एपिसोड में यही बोल रहे थे कि चेल्सी विल इवेंचुअली मेक इट वर्क. वी डिडंट नो दे विल मेक इट वर्क इन द नेक्स्ट फ्रीकिंग गेम, बट दे डिड. We made a video on that. या इससे 2 दिन पहले हमने ये कि ओके चेल्सी आर buying a lot of players, selling a lot of players, but they'll find a way to make it work. But somehow they found a way to make it work. Literally in the next game they played against the hottest team in Europe right now, against the hottest players in Europe right now, against all your Ballon d'Or favorites and everybody. They basically managed to shut everybody up, all of us, footballing fans including. So Hanji, please, somebody take us through the game. देखो, गेम से स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. We4 एंड ऑल ऑफ द फुटबॉलिंग जितने भी वॉचर्स है, फैंस है, जितने भी है, वी लिटरली जिंक्स्ड पीएसजी. क्योंकि मैंने एक पोस्ट नहीं देखा है ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिस पे भी जो भी है, जितने भी है, स्नैपचैट, एक पोस्ट नहीं देखा चेल्सी फॉर द विन का. इवन मैं 1000% श्योर हूँ साउथ लंदन के जो चेल्सी वाले सपोर्टर्स है वो खुद लिटरली 50-50 में होंगे कि हम जीत सकते हैं कि हम हारने वाले गलती से. ऐसे पोस्ट आ रहे थे कि Dembele and Desirdu are quarreling in the training camp on the basis who will score the 8th goal. ऐसे आ रहे थे. बार्सिलोना वाले भी पुश करने लग चुके थे डेम्बेले को. कुछ है पूरे लिटरली. सो इट्स अ वेरी क्रेजी सीन. सो फॉर द फर्स्ट टाइम होल वर्ल्ड वांटेड PSG टू विन, होल वांटेड प्रेडिक्टेड PSG टू विन. But at the end, we jinxed us. We literally jinxed a team who, for some reason, forget to play their own style of football. जो टीम अभी रियल मैड्रिड को कुत्तों के जैसे हरा के आ रही है, उस टीम को लिटरली अभी भूल गई वो टीम को. मींस व्हेन आई वाज सीइंग, मुझे लग रहा था कि वो ब्लू कलर वाले आर PSG और व्हाइट कलर वाले आर चेल्सी. But opposite था, because the game styles of Enzo Maresca was exactly the same like of that. pressing दोनों तरफ pressing. it was that कि कौन ज्यादा अच्छे से प्रेशर हैंडल करेगा. and we knew इन लोगों ने न्यूनो मेंडेस का it was a very off day and कोल पार्मर तो भाई कोल्ड पार्मर. मैं ग्वार्डियोला को बोलना चाहूंगा, भाई तू सिर्फ 50 मिलियन में कैसे बेच सकता है ऐसा वाले प्लेयर्स को. so that was it. मींस लिटरली अगर गेम का अगर देखे तो लिटरली गेम तो मींस वही डिसाइड हो गया था जब इन्होंने चेल्सी का जो प्रेस था ये हैंडल नहीं कर पाया और ये आराम से जो डेम्बेले जब प्रेस कर रहा था. एंड स्पेशल मेंशन रॉबर्ट चेक सैंचेज. Yes. He's been trolled all season long. The most hated Chelsea player. Exactly. Everybody has said Chelsea cannot win big titles with Robert Sanchez in goal. They've already done it twice in a span of 2 months. I saw डेम्बेले का लिटरली पेनल्टी कॉर्नर से भी लिटरली 4 यार्ड था सिर्फ. इतने पास से बंदे ने सेव किया है. Bro could have saved the Titanic today if it was for Robert Sanchez. It was that type of game. It's one of the best game he had in a while. Not letting in one goal is huge. That is huge against against this PSG side. Absolutely. तो रेक्स भाई क्या लगता है कहाँ खराब हुआ PSG का मामला
मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में तीनों खा गए थे ये लोग। 35 मिनट में ही। ये जो हाई प्रेसिंग वाली टीम होती है ना, हम्म, इनके अगेंस्ट यही वाली स्ट्रेटेजी ही काम आती है Okay. कि काउंटर अटैक पे हिट करो, अगर गोल मिल जाए तो लो ब्लॉक पे बैठ जाओ, फिर अगर जो होना है देखा जाएगा, ठीक है। हम्म, और क्योंकि ये लोग तो चढ़ ही जाएंगे ना, काउंटर प्रेस वाली टीम है, प्रेसिंग तो हम्म, पूरी 90 चलेगी इनकी, ये ऊपर चढ़ते रहेंगे और हमें हम्म, पीछे डिफेंस के पीछे स्पेस मिलता रहेगा, और एक रनर हम्म, डाल दो, वहां से और एक निकाल देगा। आप देखो इनकी लिटरली दो दो गोल्स ना, दो गोल्स ऐसे ही पड़े काउंटर अटैक में। हम्म, हाँ 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 हाँ। तो जो कोल पाल्मर मरेस्का का क्या सिस्टम जो होता है ना, इट्स काइंड ऑफ क्वाज़ी पेप गार्डियोला काइंड ऑफ सिस्टम। नहीं, ये तो Okay. उसके ही डिसाइपल्स है ना, मिकेल आर्टेटा और ये एंजो हाँ। मरेस्का। लेकिन उसने अपना सिस्टम चेंज किया है इस मैच में। उसने पूरा गया कि भाई मैं लो ब्लॉक में बिठाऊंगा। हाँ भाई, ये थियोरेटिकली काम कर जाएगा लो ब्लॉक, लेकिन हाँ। चेल्सी के प्लेयर ऐसे एक प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन में कैसे, मतलब ये प्रेशर कैसे सोक इन कर लिया इतने अच्छे अटैक के सामने, वो हाँ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बस But मैं ये that's एक्सपेक्ट कर what- सकता हूँ मड्रिड से, that's the मैं ये biggest expect कर सकता हूँ surprise. इंटर से, Exactly. लेकिन यार चेल्सी That's what. And सीरियसली वही हो गया था। wait, and Shivam, this is what we were talking about earlier as well. Hmm. एक तो obviously, I think all of us underestimated Chelsea, and maybe to some extent PSG did too. To be Exactly. very Maybe. honest. Yeah, maybe they And do. Maybe slightly. हाँ. because हमने जैसे उस दिन बात करी थी कि you only said even Chelsea don't know what they'll do next time. Hmm. At least even if they do, nobody else can predict because the kind of players they have, the sheer number of players they have, and the quality. You can't deny the quality. Obviously, you have the Yeah. quality, no doubt about Yeah. it. Maybe PSG were slightly caught out. I don't think उन्होंने expect किया था कि इस तरह से आएंगे वो लोग with five at the back, proper intensity के साथ press को match करेंगे, and they'll have the outlets to break that counter press. And then once they were hit very quickly a couple of times, Chelsea were more than okay just to sit back and relax. I'm not saying they didn't work hard, but I guess वही हुआ है PSG के साथ फिर underestimated. हाँ. Exactly. And I mean, it's a bit of a surprise how Chelsea lined up. You know, as you said, no one knows. We've talked about it. But दो तीन factors थे. एक तो we got to say kudos to Maresca. अच्छा manager है. इतना अच्छा है उम्मीद नहीं थी. Tactically flexible निकला. Playing 5 defenders. Reece James Yeah. खेला. Reece James कभी defensive mid था, कभी पीछे था. Making it confusing for, well, maybe Reece James as well. Definitely for PSG. Definitely for us. Of course, Reece James, he got substituted injury, but ये चीज चेल्सी ने काफी अच्छी करी. मरेस्का ने काफी अच्छी करी. इसी क्लब वर्ल्ड कप के एक मैच में कोल पामर मिडफील्ड में भी खेला. इट डिड पिछले नॉट मैच मेक में semi 1% ऑफ semi-final पिछले में। मैच में 1% का सेंस नहीं बना था मेरे लिए, बट मे बी It ऑन worked. पिच इट ट्रांसलेट्स टू समथिंग, एंड इट Yeah. डिड टुडे एज वेल. So kudos to Maresca for this, for Chelsea Absolutely, for believing, and absolutely. Another you know, when we were speaking in the last video about our predictions, I said whatever chance, and I think everyone knows, but I said if Chelsea has a chance, Cole Palmer has to have a brilliant game. हाँ, and he Extraordinary did. talent है वो, and he did, and he did. No doubt. और जो ऑफ डे चाहिए था PSG से, डोनारूमा से थोड़ा सा, मेंडेस से थोड़ा सा, डेम्बेले से थोड़ा सा, ये सब चेल्सी को मिल गया. हाँ, At the nice. end, I think biggest thing is Chelsea wanted it more. That's how majorly finals are decided. Yeah, Chelsea true. came out in some of their statements from some of their players as well that they're doing it for Enzo. You saw the enthusiasm Enzo had as Chelsea progressed. Pedro Neto made a statement mentioning Jota as well. Obviously. And PSG से ऐसा कुछ नहीं था. Maybe PSG were content with the season they had, and they had every right to be. But शायद थोड़ा complacency Possibly, और Chelsea की possibly. तरफ से थोड़ा थोड़ा बहुत, हाँ. एक और थोड़ी Exactly. regrets आप अगर एक और चीज, हाँ. एक नया ट्रेंड भी अगर आप किसी नोटिस किया होगा, व्हेन द मैनेजर्स प्ले 5 ऑन द बैक विद 5 इन द बैक, जब भी अगेंस्ट अ 4-3-3 सेटअप, इट्स कमिंग अ लिटिल 4-3-3 का भी एक मिल रहा है कि मींस इस सेटअप को हराए कैसे. एंड वी सॉ दैट आल्सो इस गेम में. देख लो, लूचो प्लेड अ 4-3-3 setup against Maresca and got battered 3-0. Exactly this thing happened when Amorim played with the 5 in the back setup with Sporting, and they battered Man City at home at Sporting before that in the Champions League. So you see, it's football is evolving, and आपको दिख रहा है कि भाई there is a cure for everything.
and after Hmm. some time 4-3-3 का अभी दिख रहा है कि 4-3-3 it's coming obsolete now. But to be भाई fair, I मैं won't बोलूं, say that ये completely. जो 4-3-3 वाला सिस्टम है ना, आप देखो जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए, मेनली पोजीशन बेस्ड टीम्स अगेंस्ट द काउंटर Hmm. अटैकिंग, Exactly, यही वाला exactly. I don't फॉर्मेशन think बेस्ड। it's a formation का thing. It's more Not of a style हाँ का thing. हाँ, हाँ, the स्टाइल का ही formation helped. इसमें no, there is no doubt formation helped, but we also saw Inter Milan lose to PSG. They played हाँ 5 at the back, 3 at the back. Exactly, But it exactly. is when that team is ready, मतलब that part is कि जो full backs हैं, जो हमारे wing backs हैं, उनको space भी मिल सकती है, उन्हें defend भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, उन्हें support मिल जाए, तो आपके पास न्यूमरोलॉजिकल एडवांटेज हो जाती है विंग्स पे। और ऑफ कोर्स ये 4-3-3 वाली में जो भी टीम हो मेजरली, Hmm. उनका सारा अटैक, चाहे बारसा हो चाहे पीएसजी, उनका मेन अटैक, मेन बेस्ट प्लेयर्स विंग्स पे ही खेलते हैं, चाहे लिवरपूल ले लो या कोई। Absolutely, तो उस absolutely, वजह से अगर absolutely. वहां एडवांटेज मिल जाती है तो फिर तुम आगे टीम को रोक सकते हो, स्पेशली That's अटैकिंग what. सेंस में उन्हें कम कर सकते हो। That's दैट्स what. व्हाट। And see, this is where I want to highlight a couple of other players as well for Chelsea. Cole Palmer, absolute magical game, no doubt about it. Joao Pedro, somebody who's just joined in 3 games में 3 गोल मार चुका है अगला. And 228 he's घंटे पहले, वही. to be हाँ, fair. मतलब क्या Exactly, स्पीड है उसकी, exactly, exactly. And he's adapted very beautifully. हाँ, And क्या credit स्पिक has to हुआ go है to the Exactly. coaching staff एक्चुअली। as well, no doubt. भाई सीधा सीरियसली वैकेशन One से player, आया है। one player who needs to be mentioned, gets trolled quite a bit, especially for that go Rea. पर Yeah, I like him, Mark I like him. I like Mark the player. Cucurella, he is a fullback, no doubt Hmm. about it. हाँ, But he's not your traditional fullback. He can do a exactly. lot of things. Hmm, He he can can. hold his position on the flank. He can Hmm. overlap. He can even go inside the Cut winger if inside. the winger is going out. Hmm. And he can play in that channel, वो जो लेफ्ट सेंटर बैक वाला चैनल होता है ना, वो चैनल में भी खेल के मिड तक आगे पीछे वो करके, and he did all of it in this game. Hmm. Exactly. That was genuinely a very good fullback, complete fullback performance. Again, a lot of people have rightly at times criticized him for trying to do everything, but when it Yeah, comes off, exactly. it comes off very nicely and Where you has know to be why? mentioned. Just guess from where he hails from. Which academy? हाँ समझ गया कोई नहीं Another Reflected. player, एक और प्लेयर का अगर मैं नाम लूं that missed against Real Madrid was Caicedo. Caicedo और एंजो की जो पेयरिंग थी इस मैच में, अगर देख लो, विटीनिया एंड फाबियन रुइस को जो ऑफ डे गया है, इन डोमिनेट दोनों किया के है, हाँ पेयरिंग डोमिनेट किया डोमिनेट इन किया लोगों ने है। ये दोनों पेयर दे आर नॉट इतने आगे नहीं जा रहे। कोल पामर इट्स लाइक कोल पामर तो विंग्स में खेल रहा था, बट दिस टू पेयर कंट्रोल्ड द मिडफील्ड। काइसेडो जो लास्ट मैच रियल मैड्रिड का नहीं था, सॉरी रियल मैड्रिड बोला, फ्लूमिनीज का जो मैच में ये नहीं था, फ्लूमिनीज वर इजीली, हाँ थोड़ा डिफरेंस हो रहा था मिडफील्ड में, इट वाज थोड़ा लेवल होता तो इट वुड हैव बीन चेल्सी ऑन अ बैक फुट। बट इस मैच में काइसेडो बीइंग इन द मिडफील्ड हेल्प्ड देम अ लॉट, क्योंकि विटीनिया आपका है लिटरली रन बनाता है and makes that ball to Dembele, and Dembele takes it to Desirdo and scores. Okay, after that नहीं तो द टीम इधर विटीनिया का भी एक मेंशन है कि उसका भी एक ऑफ डे गया, विच इज फेयर टू इनफ। भाई 6 महीने से बंदा लिटरली परफॉर्मेंस दे रहा है, इतने एक ही दिन में क्या ही बोल सकते हैं, किसी का भी ऑफ डे हो सकता है, टू बी फेयर। अनफॉर्चुनेटली फॉर पीएसजी इनके सारे टॉप परफॉर्मर्स का ऑफ डे काफी हद तक साथ साथ ही आ गया, व्हिच इज अगेन इट हैज टू बी द क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू चेल्सी फॉर न्यूट्रलाइजिंग देम। इट वाजंट अ केस ऑफ सब खेलना भूल गए इकट्ठे, इट वाज चेल्सी एंड एब्सोल्युटली चेल्सीज गेम। एक और चीज, आई थिंक एंजो फर्नांडिस 9 या 10 फाइनल्स खेल चुका है आज तक अपने करियर में, एंड ही इज नॉट लॉस्ट अ फाइनल येट, ही इज नेवर लॉस्ट अ फाइनल इन हिज वो अभी नया कैसेमिरो बन चुका है। That's what, he's never lost a Not final. a single one. And as we stand today, Enzo Fernandez is the only player in the world who can call himself a true world champion, because Exactly. he is the defending World Cup champion with Argentina, and now he has won the Club World Cup with Chelsea. He's the only one who can say that right now, and that is Wow. It's a very बहुत मजाक great उड़ा है thing उसका to over the last few months. That's what, बहुत मजाक उड़ा है उसका over the last few months, rightly so at Rightfully times. so. Exactly. But at this point, he has something that no other player can boast of, and that finals wala record is something amazing, yeah, no doubt about it. And hats off. See, club rivalries,
not liking a club, criticizing Not something. liking a player, Those I'd say those it. things will exist. नहीं, I'm saying Chelsea की बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं भी चेल्सी की बात कर. Those things will exist. See, I don't think any of us is an actual Chelsea fan, to be honest. We don't like नहीं. what they're doing to football, honestly speaking, but they are whatever they are doing. It seems to be working. It started working at the biggest stages of them all. Hmm. And credit where it's due, the kind of football they played, especially in the final, that has left everybody sort of stunned because it wasn't a park the bus wala style, even with 5 at the back. So that was something good to see. Nah, they played smartly as well. So Exactly. The project, the whole buying and selling quickly, वो जो एक वो होता है ना startup culture में there's this thing hire start hire fast. That is what Chelsea is doing at this point in time. Exactly. But And it seems to doing be good. working for them. It seems to be it working is, for them at this point. and And you know, going forward in the next season, Chelsea will. मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था इनफैक्ट Chelsea will be contender. Chelsea will जो compete. मर्जी Chelsea बोलो. will compete. Actually, rightfully said Sudhir, ये कोई one off game नहीं थी. Chelsea last season, this season, Premier League season that happened, played very well initially. We all saw that and we all discussed that as well. They did play very well initially. They had problems थोड़ा बीच में, end में they regained. वो होना ही था. It was a new team still, a new manager still. Exactly. पूरे साल की कंसिस्टेंसी तो नहीं आ पाती और उनके प्लेयर चेंजेस तो हम बोल ही चुके हैं उस पर. बट पिछले साल ही दिख गया था कि टीम में पोटेंशियल है, जल्दी राइज कर गई है और नेक्स्ट ईयर और अच्छा compete करेगी. कौन कौन से प्लेयर होंगे compete करने के लिए इसमें बहुत मजा आएगा. बट भाई हमने जो चेल्सी का वीडियो किया था ट्रांसफर्स वाला, उसके अंदर हमने काउंट भी किए थे कितने प्लेयर्स आ रहे हैं. और अभी तो एक दो ने ही ज्वाइन किया है. अभी तो क्लब वर्ल्ड कप के बाद देखो जब सीजन शुरू होगा और कितने इकट्ठे कर चुके होंगे ये लोग. और तो कितने अब छोड़ चुके भी हैं ये लोग. नॉनी it मैडो के is- तो it is जा a- चुका है ऑलरेडी. Exactly. It is a scary proposition for a lot of rival teams, not just in Premier League, in Europe as well, because they हाँ. are competing in the Champions League this time. So that Yes. should be fun. एक चीज I really want to appreciate Chelsea on, Chelsea players mostly, the way they handled Mr. Dolan Trump. That was मजा आया कुछ मत देख. बोलो. I know they. कुछ I know मत they बोलो could सुजय do भाई, यूएस का वीजा बंद कर देंगे ये लोग. मेरे को वैसे नहीं देने लगा कोई. हाँ, जैसे वो दो साल बाद रहने वाला है वहाँ पे. But see, I think it was more a case of him not exactly knowing how he is supposed to go about it, because football is very new. अरे he doesn't know what to do in any sphere, business छोड़ के. So मैंने नहीं बोला ये. हमने कुछ नहीं बोला. Nothing. You can take that one from me. Nothing. मेरे तरफ से कुछ But नहीं है. to be, it was actually quite funny to watch. Reece James, are you going to stay here? He literally said that. And even Cole Palmer का एक photo आ रहा है. I'll try and I find know that देखो ऐसे you know what expression he had, Cole Palmer. क्या है? जाता that was quite funny. भाई, Overall उसका Club तो World Cup. नहीं, उसका तो वही है. उसको किसी ने पंडित ने पूछा था हाउ आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट टुनाइट, वो बोले नो कमेंट. वो तो पिछले मैच का था. But He is class. overall, अगर Cole Palmer is क्लब class. वर्ल्ड कप की हमने काफी बात करी है, to be fair, I don't want to spend more than a minute or so on this thing. Club World Cup overall, I don't think it was that big a hit as a tournament, especially in the first iteration of this particular trial. Next वाला अब कहाँ होगा उस पर डिपेंड करेगा. कुवैत, सऊदी, ये सब भी are in talks. अगर वो होगा तो कतर, अगर वो हो गया तो फिर से विंटर में होगा, disrupting a season. That will be a big challenge, obviously. Apart from that, they need to find a way to make it a little more exciting, because early stages में, group stages में, I know all of us obviously cared with the big teams playing each other. Obviously, it was fun. And I'm sure the clubs that were there, unke fans cared about. I'm not oblivious to that fact. But something needs to be fixed. You don't have the champions of Italy, Spain, England. So many. Exactly. Major leagues. So. Too many games with big gaps between the teams. And holding it in places, I understand. You're trying to grow football in places that don't traditionally have as much football. But trying to have the inaugural version of the tournament in a place like USA obviously took the charm away from it a little bit. Exactly. No one likes seeing empty stadiums, and there were many empty. आपने जो एटमॉस्फेयर क्वालिफिकेशन में के बारे में बोला, लुक एट द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स. वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स फिनिश जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप फाइनल्स. नहीं, उससे पहले ही खत्म होता है, जस्ट पहले. So you will get all the top teams who are currently at their peak form. Exactly. That's why they have qualified for the finals. तो वैसे ही आप करंट चैंपियंस को कैसे मिस आउट कर सकते? That's what.
That's what. So they'll have to relook at it. Honestly speaking, when we made the first video about the Club World Cup, we were very dismissive of it. We are probably a little less dismissive of it, to be very honest. Especially seeing the later stages का game. Then उस time पे भी हमने बोला था later stage will be exciting. हाँ But they need to find a way to make the whole tournament exciting. Otherwise, your plan of growing the game in places that the game is not there as much, Exactly. that won't work. Yeah. Already And they are football just losing is money. exactly They're- already football is struggling in certain areas and certain demographics as a 90-minute sport. You don't want to be left behind with these experiments, with these very very expensive experiments. Yes. बाकी तो नंबर ऑफ गेम्स और ये सब फिक्सचर कंजेशन की बात तो कभी और हम तो करेंगे जब कोई ये- और इसके बारे में बात करेगा, है ना? आई थिंक वी कैन रैप इट अप हियर. कांग्रेचुलेशंस टू चेल्सी. Chelsea. एंड सॉरी हम लोगों ने सबने द होल फुटबॉलिंग वर्ल्ड अंडर एस्टिमेटेड यू. kudos on that performance. Wonderful, no doubt. And we look forward to what you can turn up and how many players you can turn up with in the next season. That should be fun to watch. बाकी तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे लाइक का बटन दबा दो भाई. अपने थॉट्स अबाउट चेल्सी एंड व्हाट दे आर बिल्डिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, डू लेट अस नो अबाउट दैट इन द कमेंट्स बिलो. एंड चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा तो प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कर दो. पिछले 2-3 दिन में कुछ नहीं बढ़ा है, एक एक तो बढ़वाओ प्लीज. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. शाबाश, आएगा आएगा. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय. Bye bye.